Before moving with our Oracle journey, let me give this some clarity. You guys are on the track. Okay. In this workshop, we are not going to discuss anything about theory. 80% will be practicals, that is hands-on knowledge, which is really required being a database administrator, because वहां पे आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि what is Oracle history, right? People ask how we can do it. What is your skill set? कोई ये नहीं पूछेगा आपको कि Oracle database बना क्यों है, किसने बनाया. No one bother about it. करेक्ट. जैसे आपने कुछ जन ऑलरेडी स्टार्ट किए ओरेकल की जर्नी, कोई हिस्ट्री नहीं पूछेगा, इसका डोमिनेंस नहीं पूछेगा, बट ये पूछेंगे कि आपको ओरेकल में आता क्या है. व्हाट इज योर एक्सपर्टीज लेवल, विच एरिया यू डू हैव द एक्सपर्ट नॉलेज, राइट? दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क, बिकॉज दे नीड एक्सपर्ट पीपल. व्हाई? क्यों ओरेकल freshers could not able to touch oracles? Anyone know about it? रियल इंडस्ट्री में उनको प्रोडक्शन पे लॉगिन भी नहीं मिलता है, राइट? Anyone have any idea about it? No? Okay. जो क्रिटिकल डेटाबेसेस होते हैं गाइस, वहां पे बीइंग अ फ्रेशर, अगर आप बोल रहे हो मैं फ्रेशर हूं बट मुझे सब नॉलेज है, स्टिल दे आर वरीड अबाउट इट. बिकॉज मैंने क्लास किया है, मुझे सब कुछ आता है, तो भी वो आपको एक्सेस नहीं देंगे. व्हाई? बिकॉज ओरेकल डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट इज वेरी क्रिटिकल फ्रॉम योर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, organization point of view. That can be billing information, that can be CRM information, that can be ERP information, anything. Right? Most of the information is nothing but the transaction information. Means have some relation. आपका बैंकिंग स्टेटमेंट कहां से जनरेट होता है? आप जैसे ऑनलाइन पोर्टल कोई भी बैंक का यूज करते हो, राइट? आप जस्ट nowadays you go there and click last 6 months I need the bank statement. Within the next second bank statement in your laptop. How it is working? Earlier it was not there, right? Because of revaluation of Oracle, every single bank having their database on the Oracle, 99.99%, I can say 100% as well. Because wherever payments comes into the picture, without Oracle that cannot be happen, guys. होगा ही नहीं. आप अभी ऐसा कभी होता है कि आप ब्राउजिंग करते हो, शॉपिंग पोर्टल पे जाके जस्ट ब्राउजिंग करते हो, वांट टू सी प्रोडक्ट और वांट टू परचेस. आप क्या करते हो? ऑनलाइन पोर्टल जाके जस्ट ब्राउजिंग करते हो, यू वांट टू बाय समथिंग. हाउ इट इज वर्क? वांट टू बाय, राइट? राइट? आर यू गाइस विथ मी? Yes, sir. Right? We want to buy something. That's why we are spending our very crucial time on the online portals, shopping, e-commerce. But वो उसका आपका जो ब्राउजिंग है वो एंड कब होता है? Once you ordered it, once you make your payment. And how that payment works in the back end, that is because of Oracle. It's always give you the guarantees. आपके अकाउंट से 2000 रुपीज जो शॉपिंग के थे प्रोडक्ट के, वो माइनस हुए हैं, और 2000 रुपीज दैट शुड बी क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट. Who is taking care of it in background? Oracle. कोई भी आप ट्रांजैक्शन ले लो, जहां पे पेमेंट आता है, जहां पे आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं, विदाउट Oracle that is really not possible. And why I'm sure about it? Because I do have the very lengthy experience on Oracle since last 13 years. I work major companies. Someone work on the IBM, right? Who said IBM? Vodafone, Idea? Siddesh, right? Sir, myself and Sanket.
यस गाइस, सो वहां पे आपके पास जो डेटाबेस है, Right. उसमें जो डेटा है, वो आपने कभी ऑब्जर्व किया है किस टाइप का डेटा है वहां Relational है पे? सर. रिलेशनल डेटा है, बट व्हाट काइंड ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा? टाइप ऑफ डेटा इज कस्टमर डेटा, राइट? आपके Right, पास right, ओनली कस्टमर डेटा है। सीआरएम right, डेटाबेस है आपके पास, बीआरएम डेटाबेस है जो बिलिंग के लिए आप मेंटेन करते हो, right, रिपोर्टिंग डेटाबेस मेंटेन करते हो, यूएटी टेस्ट, राइट? right, right. ये सब डेटाबेस क्यों यूज होते हैं? फॉर एनालिटिक्स पर्पस। व्हाई दिस डेटा इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस मच बिग अमाउंट ऑफ डेटाबेस, राइट? Right. वोडाफोन आइडिया के पास मोर देन 50-60 टेराबाइट्स के डेटाबेसेस है। The size of database is more than 60 terabytes, not less. इतना मेजर डेटा होता है, इतना क्रिटिकल होता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू टू टेक अ डिसीजन एंड सपोर्ट द कस्टमर्स टू प्रोवाइड द सर्विस, राइट? एंड वन मोर, दिस इज द हाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस, ओके? वन मोर, लेट्स टेक अ वन मोर केस जहां पे हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं हाउ इंडस्ट्री यूजिंग दिस डेटा। अब ये डेटा तो है, क्रिटिकल है, ये तो समझ में आ गया हम सबको, राइट? Now my question is, how company use this data? How to increase their business? डेटा तो है, ओके फाइन, दैट्स फाइन, हमारा पिक्चर क्लियर हो गया माइंड में कि यहाँ डेटा आने वाला है, ये डेटा बहुत क्रिटिकल है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो डेटा स्टोर होने वाला है, दैट्स कंप्लीटली एग्री। नाउ हाउ कंपनी यूज दिस डेटा टू इंक्रीज देयर बिजनेस? एनीवन आइडिया अबाउट इट? एनीथिंग जो भी रहेगा आपके माइंड में? सर सिंपल एंड सॉर्टेड मैनर में स्टोर करना इन द फॉर्मेट ऑफ ओके, टेबल्स. वेरी गुड। Yes, the way to manage the data. Very good, Siddesh. It should be easily accessible as well. It should be secure. Okay, that's really nice. That is the very important point. Okay, I'll take that point later on. It's very good point. Okay, हमने अभी क्या समझा? डेटा इंपॉर्टेंट है और किस टाइप का डेटा है, ये बात क्लियर हो गई आपके माइंड में, राइट? एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes. Okay. Yes. Now let's understand how company use this data. Being Oracle database administrator, it's very difficult for us to understand how company use this data because we guys are fed up with multiple works, lot of works. Okay, इतना टाइम मिलता ही नहीं है एप्लीकेशन और लिनक्स के बाहर जाए. Once your data is there, then BI team is comes into the picture, business intelligence team. They perform some analytics on your data जो Oracle में present है, जो डैशबोर्ड में शो करेगा, and they take some inputs from there to take a business decision. What I mean to say, let's take banking example once again. जब आप कॉलेज में थे, did you ever receive a call from bank for offering the credit card? किसी को आया है जब आप कॉलेज में थे? Not now, but now you are getting calls, right? आपको अभी कॉल आ रहे हैं once you join the organization for offering the credit card, Yes, that's right. yes, right? But college life में किसी को नहीं आया, right? Why? Is that secure our data? इसका मतलब है हमारा इंफॉर्मेशन कोई यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है? कोई तो यूज कर रहा है हमारा इंफॉर्मेशन, राइट? बिकॉज नाउ दे एनालाइज आवर बैंक स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल मंथ this much amount of salary is getting credited in our account. They analyze it. That's the only reason credit card industry now revolve their self. अभी हमें कॉल आ रहे हैं, बट जो स्टूडेंट होता है उसको कॉल कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यार उसके पास जो पॉकेट मनी आता है इट्स नॉट फिक्स्ड वन, इट्स वेरी स्मॉल, राइट? वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड दे डोंट बॉदर अबाउट इट. उनको पता है क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो अमाउंट रिकवर कर नहीं सकता इन केस ऑफ एनीथिंग. आया समझ में वन ऑफ द यूज केस हाउ इंडस्ट्रीज रिवॉल्व
to use the data. और अगर रिवॉल्व करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इज रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ डेटा एनालिसिस, दिस इज हाउ डेटा इज इंपॉर्टेंट. एवरी सिंगल डेटा. ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट आई गिवन यू. लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. आप जो भी टेलीकॉम टेलीकॉम प्रोवाइडर का आप सिम यूज कर रहे हो, अगर आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, okay, 5 times in the month, you will receive the call from them and they understand what is happening. Are you still facing the same issue? आप किस एरिया में होते हैं, कौन सा नेटवर्क है, यू नो एनीथिंग अबाउट इट. इतना सारा इंफॉर्मेशन आपसे लिया जाता है बिकॉज दे वांट टू इंप्रूव देयर सर्विस. अभी आपको रेयरली कॉल ड्रॉप दिखेगा, राइट? रेयरली, वैसे तो होगा नहीं, बट रेयरली इट्स स्टिल हैपनिंग. Okay, this is how data gets analyzed. One more example for billing. Postpaid जो customers होते हैं, उनका पूरा billing generate होता है billing database से. Which service you consume, which plan you are using currently, right? What is your current plan? What should be the recommended one? कौन सी सर्विस आपको एडिशनल ऑफर करनी चाहिए? What is your preference area? You will receive the call if you are the postpaid customer for any telecom provider. प्रीपेड वालों को नहीं आएगा कॉल, बट पोस्टपेड वाले always receive the call for better offer. How this is happening? Because of data. Understood guys why I want to tell this all story? क्योंकि without data industry cannot survive. And in 2021 Google claimed that every single organization is data organization. It means without data कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी. And the data needs to be stored, Siddesh, on proper manner in tabular format. आपने जो बोला, it should be easily readable, and that is only happen to store in the database. Once you store there, you can easily access there, right? And the data is quite important. It should be secured as well. It should be secured. इसी रीजन से, दिस इज द ओनली रीजन, हम फ्रेशर्स को डेटाबेस का लॉगिन नहीं देते हैं. अंडरस्टूड व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नॉट अलाउइंग फ्रेशर्स टू यूज और लॉग इन द डेटाबेस? क्योंकि वहां पे अगर सिंगल क्वेरी बाय मिस्टेकली फ्रेशर ने एग्जीक्यूट कर देगी और बड़ा अगर स्टेटमेंट रहेगा, वो इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन योर कस्टमर सर्विस, डेटाबेस परफॉर्मेंस. फ्रेशर्स को अवेयर नहीं होता हाउ डेटाबेस परफॉर्मेंस शुड बी मैनेज, व्हाट काइंड ऑफ क्वेरी शुड बी देयर, राइट? समवन इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन एसक्यूएल, राइट? 2 लाइंस की कभी एसक्यूएल रन नहीं होती है गाइस रियल वर्ल्ड में. इज ऑलवेज इन द मोर देन 10 20 25 30 लाइंस, राइट? तो जहां पे हम एसक्यूएल लिखते हैं गाइस, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ प्रॉपर पैरामीटर, जॉइन, where clause, order by clause, group by clause, count function, anything you are looking for. You cannot directly fire the query, select star from your whatever account table. That is really not possible. If you are not aware about the SQL statements, don't worry about it. You will learn every single thing. Hope you guys are having now mindset clear. डेटाबेस क्यों चाहिए, डेटा से ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, और डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है डेटाबेस में स्टोर करने के लिए. It's clear now? That is how Oracle works. Now you guys have already taken a decision to move on with the Oracle database, right? So this is, let's move to the next slide. Oracle in industry. For your kind information guys, Oracle is not new technology. It's more than 40 years now Oracle is working. हमने जब सोचा भी नहीं होगा.
तब से ओरेकल चलता है. इट्स नॉट न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी बूम हो रही है. आप अभी 2-3 साल काम करोगे और कोई प्रोडक्ट पे काम करना चालू कर दोगे. इट्स नॉट लाइक दैट. Last 13 years I am working on Oracle. And every single day, if I start searching the new job, within a 1 month, I'll get my desired candidature in the market. कोई भी कंपनी जो मैं चाहता हूँ, you'll get good offers. This is how every single years Oracle requirement is going to increase. Still increasing, guys. कभी नहीं आएगा जो भी रिसेशन चल रहा है फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज गाइस. डोंट वरी. जो भी आप सुनते हो जो लिनक्स पे काम कर रहे हैं, they know how important it is, how Oracle work on the database. So every single year guys, Oracle database skill set requirement is getting increased because of a database importance. It must be secured, it must be managed performance, it must be patched, it must be up to date, it must have the proper backup strategies, it must have the proper replications there. Everything should be there. मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आपका माइंडसेट क्लियर कर दे कि जैसे हमने अभी फोन पे का एक एग्जांपल देखा कि जो फ्रेशर को क्यों नहीं दिया जाता है, राइट? और डेटाबेस का क्यों इंपॉर्टेंस है. लाइक दिस काइंड ऑफ एग्जांपल यू ऑलवेज कंसीडर गोइंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट टू रिलेट योर रियल लाइफ. तो ही आप हर चैप्टर को should not be remember, it should be by heart automatically while practice, while studying. That's the only reason I'll cover only 20% of theory, 80% will be practicals. 80%. This is how the workshop will be conducted throughout next 2.5 months. But I would say it will not 2.5 months, it reach about 3 months. So Oracle, it's kind of database जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है. Either it is Windows, Linux, Mac, any kind of even Kali Linux as well. HP, Solaris, what kind of operating system it is there. Oracle is always compatible to run there. That is the only one reason, guys, and one of the biggest reason to use Oracle across all the industries, irrespective of any domain. ऐसा कोई डोमेन नहीं है जहां पे Oracle काम ना करता हो. Because of this compatibility, Oracle कहीं पे भी रन हो सकता है. Majorly in the real world, in the production, UAT, test, okay, kind of pre-prod environments are running on Linux, not Windows. So going forward, you always see 99.99% Oracle always on the Linux operating system, irrespective of flavors, okay? Don't worry. HP, Solaris, these are the AIX, Linux, Red Hat. These all are the flavors of Linux. इसी पे ही आपको Oracle देखने को मिलेगा. Why? Because these operating systems are more scalable, more stable, error free, and you can secure it as well. You have the more control. Windows is not stable, guys. Sorry to say. I know you guys are lover of Oracle, Windows, right? Because you are since very long time you guys are using Windows, right? Just click, everything will be work. But sorry to say, Linux never work in the GUI fashion. It's complete command line operating system. But those who started working on it, they know how much power of Linux it is and how much power of Linux and Windows it is. They can easily compare. Those who already started on Linux. जिसको नहीं पता है, don't worry about it. We'll learn the Linux as well from scratch. See guys, in this master class, I never consider कि आपको कुछ पता है, right? We'll always start from scratch, from zero. Those who do not know database as well, don't worry. We'll start from there.
So as we see, multiple backends. What I mean to say in the last point. So every single organization nowadays develop multiple projects and all the shopping centers, these and the all application. They must need backend is database to store their application information. The data should be persistent. Once stored, it should be accessible. What I mean to say that is your memory card is persistent or is your laptop is persistent? What kind of storage you consider it is safest storage? Your laptop or G drive? What is the persistent storage? Means once store the data, it should be accessible all the time. Okay, without any worried about it. Can you consider G drive is the safest storage or your laptop is the safest storage in terms of durability and availability of database? या डेटा आपका जो भी डेटा है पिक्स होंगे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी रहेगा यस गाइस क्या लगता है आपको विच वन इज द बेस्ट J drive. जी ड्राइव ओके व्हाट अबाउट अदर्स ओपिनियन पर्सनल लैपटॉप है अपना और एक जी ड्राइव है जो हमारा नहीं है someone is just offering us संकेत G drive, sir. जी ड्राइव ओके is Rishi there Yeah, yeah. I'm yes there. okay great so what is your opinion Rishi is G drive preferable or your base SSD drive on your laptop I think SSD drive on my laptop. It will be more. okay Yeah. okay so I do have both the options right both are cheapest for me G drive तो free में ही है laptop तो purchase हो चुका है तो it is also free for me but can you access the data once you store on your laptop from any other network not possible right you must be locally logging to your data logging to your laptop and access the data that is one second if some disaster happen with your laptop let's say आप कॉफी पी रहे थे या गेम खेल रहे थे something damage can you recover the data you can every single data that is not possible but have you ever faced the issue to lose your G drive data कभी आपका G drive की कोई फाइल मिस हुई है करप्ट हुई है not a single KB guys right this is mean by persistent storage that is the only reason guys remember this word Oracle database always work on persistent storage not kind of SSD or HDD disk no it always behind the SAN NAS storage because data once data is stored it should be persistent across the all database life across the all database life it mean to say जब तक मेरा database जिंदा है it should be data there once I drop it should be drop once data is there it should be persistent whether वहां पे आपका डिस्क करप्ट होने दीजिए आपका डेटा सेंटर लॉस होने दीजिए अर्थक्वेक आने दीजिए नथिंग हैपन टू योर जी ड्राइव गाइस नेवर गोइंग टू हैपन बिकॉज जो डेटा स्टोर होता है ना वो 11/9 गारंटीज देता है व्हाट आई मीन टू से क्रैश कैन बी हैपन वंस इन द 100 years वंस इन द 200 years जैसा आप जी ड्राइव का प्लान लोगे राइट नाउ वी आर यूजिंग 3.1 राइट जहां पे हमें 15-16 GB स्टोरेज मिलता है हम वहां डेटा स्टोर करते हैं स्टिल यू आर अंडर द बेसिक पॉलिसी ऑफ स्टोरेज रिटेंशन कि आपका डेटा इनएक्सेसिबल रहेगा फॉर 1 hour के लिए इन 100 years इन 100 years गाइस अगर उनका आप प्रीमियम प्लान लेते हो तो वो 1 hour 400 years के लिए रहेगा This is how SLA work. What is mean by SLA? Anyone? Those who already started working, they must aware. What is SLA, guys? Service level agreement. Very good. Why it is required, Siddesh?
What is your So opinion? keep the business means requirement as per the process and As per implement the this. customer, Yeah. say like. Very good. SLA is required just like agreement guys. हम कहाँ रेंट से हाउस लेते राइट? हमारा और ओनर का how the agreement that define it is how deal right? सेम इन द इंडस्ट्री जैसे कोई किसी का आप डेटा संभाल रहे हो किसी का एप्लीकेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स अंडर द एसएलए उसको एसएलए बोला जाता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू ऑफर कितना डाउन टाइम लोगे आप मेंटेनेंस एक्टिविटी क्या होगी इफ यू कुड नॉट फुलफिल दिस हाउ मच यू हैव टू पे मींस आप नहीं पे करोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी दैट्स एसएलए इज ऑलवेज देयर इन द सिस्टम्स इन द आईटी वर्ल्ड लिनक्स का है डेटाबेस का है एप्लीकेशन का है नेटवर्क का है स्टोरेज का है एवरी सिंगल कंपोनेंट और कंप्यूटर रिसोर्सेज हैविंग द एसएलए जैसे हमने स्टोरेज की बात की राइट मैंने जो बोला 100 years 1 hour 1 hour is downtime downtime means sometimes your data is not accessible that is mean by downtime right or we store the data to access every single time guys otherwise your application won't work अगर एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है क्या इंपैक्ट हो सकता है गाइस व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अगर लेट से एप्लीकेशन वर्क नहीं हो रहा है व्हाट कैन बी इम्पैक्ट अगर एंड यूजर को डिले हुआ मीन्स यू आर लूजिंग द कस्टमर 100% chances will be you are losing the loyal customers that's why speed should be important right means speed means that application availability also requirement वो अवेलेबल होना चाहिए वो कब रहेगा अगर आपका डीबी डाउन है एप्लीकेशन इज अप can you able to access the data your transaction is not going to work that's why Oracle Linux network and application should have the SLA guys clear why SLA is required any question okay now the very again हमने तो already discuss कर लिया this side is saying this slide is saying Oracle database terminology is not Oracle database technology is not new one and it have the immense opportunity across the global market not in India across the global market आपको जिस भी देश का टारगेट करना है आप सर्च कर सकते हो देयर आर लॉट ऑफ Oracle database opportunities there lot of this slide is given by CNN.com they perform some research and they perform some analytics and they should say in coming 2-3 years again Oracle database headcount and requirement is going to increase because of technology revolution right जैसे मैंने आपको बोला nowadays technology is quite booming और जहां पे टेक्नोलॉजी बूम होती है बैक एंड इज ऑलवेज डेटाबेस विदाउट डेटाबेस टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव एनी सेंस क्योंकि डेटा के बिना कुछ नहीं होगा only data and their DBA play very important role that is the only reason database administrators jobs are highly paid jobs और यूएस में इसका डिमांड और भी ज्यादा है फॉर फ्रेशर्स एज वेल क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनी का हम वर्क करते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन का विल ऑलवेज गेट द गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यूएस कंट्रीज ओके यूरोप का भी आपको मिलता होगा राइट यूरोप और यूएस हैव द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ओरेकल ईबीएस ओके एंड इट्स ऑलवेज फॉल इन द टॉप 10 जॉब रिक्वायरमेंट कैटेगरी गाइस ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब ऑलवेज although Oracle is not only database in the market guys ये ऐसा एक ही डेटाबेस नहीं है इसके सिवा अदर भी डेटाबेसेस है कि आपने सुना होगा माई सिक्वेल सिक्वेल सर्वर राइट पोस्टग्रेस other lot of databases are there more than 256 databases are there in the market they claim themselves they are the transactional database but still Oracle is the top and more than 50% market is captured by Oracle only
because of their transaction guarantees, जैसे हमने initially discuss किया, right? Once you order, Oracle make sure आपके account से amount deduct होना चाहिए and should be credited to others account as well. Debit credit का responsibility database backend में ले लेता है, और that is Oracle claiming acid principle, ACID. आपने कभी सुना होगा ACID, those who are having the background of technical education या Oracle के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो ACID, acid principle. Anyone heard this name before? Acid principle is simple, okay? हम मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में सुनते हैं. Acid, it means gives 100% guarantee of your transaction. Simple. At least ACID stands for atomicity, consistency, isolation, and durability. What is mean by that? We'll learn going further. Don't worry about it in detail. But which is not required that much. Now it's very important to understand. This is give you the guarantee. As I said, domination of Oracle is very high. Very, very high. More than 50% market is captured by Oracle. Still, there are a couple of development environments. They use MariaDB, Postgres, MS SQL, Cloud SQL, okay, Azure database. There are a lot of databases are there in the market. But one of the dominant is Oracle. This slide is not recent one. It is quite old one. Here is the history. As I told you, it's not a new technology. It's working since more than 40 years. Here I'm not going to tell you anything about the history. किसी ने बनाया, दो दोस्त साथ में बैठे थे, आज उन्होंने कुछ डिसाइड किया, आज कुछ तूफानी करते हैं, and they develop the database. It's not like that. This history is for you come to know how Oracle revolved themselves since more than 40 years. That is the only reason they dominate in the market, in the every single industry, and still they survive and offering the market, capture the market. It's one of the technology giants in the market, biggest technology giants, right? They revolve themselves according to market requirement, right? जैसे cloud आया 2013 में, they said we have our database ready to support cloud as well. They never say कि हम कुछ नहीं करेंगे. No. अदरवाइज इतना मार्केट में वो डोमिनेट नहीं कर सकते थे. Earlier in the start of Oracle was very limited to lab environment. It should be accessible within the LAN. जब इंटरनेट 90s में रिवॉल्व हुआ, 1990s में, तब उन्होंने इंटरनेट को सपोर्ट करना चालू किया. इट मींस जैसे हमने अभी स्टोरेज का एग्जांपल लिया, वंस यू स्टोर द डेटा इट शुड बी एक्सेसिबल अक्रॉस एनी लोकेशन. तो वो लोकेशन से अक्रॉस होने के लिए इंटरनेट सपोर्ट चाहिए था टेक्नोलॉजी के लिए. देन Oracle started their version in 1999, Oracle 8. Why I'm telling this history, guys? Don't worry, don't have to remember anything here. You just try to understand. Try to understand how Oracle matched their requirement as per the market. And then in 2002 से 2006 तक grid computing terminology was very famous. That was the architecture implementation. Okay, that is compute. Now cloud. After some years, you will be come to know quantum computing. New terminologies always work because people are doing a lot of research in the back end. जैसे अभी cloud है, next will be quantum. This is things are working, guys, and I'm 100% sure Oracle will also offer the quantum database. क्योंकि उनको मार्केट में रहना है, their product should be support the latest technology. Okay, they evolve from every single thing, from the local laptop database, lab database, to now it is enterprise database. It's not local or personal database. It is they now are called as from Oracle 7 in 1992. They called their self as an enterprise database. उसके पहले वो database बोला जाता था, personal database. Because Oracle का intention ही वो था development का, to manage the library data. Within a college, within a school, it should be managed. But after that, they revolve themselves and they consider, means they declare themselves from the Oracle 7 and 8 onwards is enterprise database. That's why
सी जैसे आपने देखा है 19C, 18C, 12C. व्हाट इज सी? सी स्टैंड फॉर क्लाउड. उसके पहले आपने सुना होगा 10G, 11G, राइट? दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग. And one of the stable version in the grid computing was 11G. One of the stable. और now क्लाउड में स्टेबल है तो वो है Oracle 19C. एंड दैट इज द ओनली रीजन स्नेहा आपको जो अभी डेटाबेसेस मिले हैं वो 19C के मिले हैं. And there is also one of the other reason. I'll let you know in the next 5 minutes. अभी आपको जो डेटाबेसेस मिल रहे हैं 19C के मिले. तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सर देन why we are not directly focused on 19C? Why we should consider 12C as well? Because nowadays migration is running in the market. People are migrating their database from 12C to 19C. That's one of the biggest project running in the market. And you must be know how 12C works and how you can migrate the database from 12C to 19C so that you have the expertise knowledge on that factor. So going forward जब आप job change करोगे तो आप बता सकते हो that was the project I delivered and I do have the expertise and extensive knowledge on database migration or upgradation. So this is very simple. I think you guys are already aware because I don't have any fresher here today. But this is very important life cycle of database in the organization. Because database always work on server guys. उसको एक host चाहिए होगा. That host always is the hardware. Anyone know where is your server? Data center. Okay. Yes, it's stored in the data center. So what is data center? This is the data center guys. Data center is the place सिद्धेश जहां पे आपके ब्लेड सर्वर रखे जाते हैं और आपके जो लेट से सीपीयू सर्वर तो सबको पता है यार. एनीवन डोंट नो व्हाट इज सर्वर? सर्वर पता है या नहीं पता है? शुड आई अज्यूम एवरीवन नो? सो नाउ आई एम अज्यूमिंग एवरीवन नो व्हाट इज सर्वर. ओके. द big CPU, just take an example, big CPU, big RAM, big processing power, big storage, just simple. जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्टोर करती है. अब वो खुद के ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं रखेगी उसका रीजन है. ओके, फर्स्ट हम डेटा सेंटर को समझेंगे देन उसके रीजन को समझेंगे. डेटा सेंटर ऑलवेज आर द सिक्योर्ड प्लेस, सिक्योर फ्रॉम एनीथिंग, एनी डिजास्टर, इवन अर्थक्वेक आने दीजिए आपके डेटा सेंटर को कुछ नहीं होगा, आपका डेटा ऑलवेज सिक्योर्ड होगा. वाटर फ्लो, और ये ऑलवेज वाटर के बाजू में होता है तो वो ऑलवेज ये होता है राइट, रिस्की होता है. सो डोंट वरी अबाउट एनी नेचुरल इश्यूज, इट्स ऑलवेज सिक्योर. और वो ऑलवेज वाटर और सी के बाजू में इसीलिए होता है क्योंकि वाटर आर ऑलवेज नेचुरल हीट सिंक. आर यू गाइस एग्री विद मी दिस सेंटेंस? क्योंकि डेटा सेंटर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, कंजम्पशन होता है और उसमें जो हीट आती है वो काफी हेवी होती है, बहुत ज्यादा हेवी. इसी वजह से वो ऑलवेज सी के बाजू में ही होते टू नेचुरल सिंक, हीट सिंक. दैट इज वन रीजन. डेटा सेंटर नॉट इन द सिटी, दे ऑलवेज फार फ्रॉम योर सिटी, व्हिचएवर इट इज. और डेटा सेंटर का लोकेशन कभी डिस्क्लोज नहीं होता है. लिनक्स गाइस, राइट? आपने ऑलरेडी मल्टीपल सर्वर को एक्सेस किया है बट यू डोंट नो वेयर दैट सर्वर इज रिसाइड्स. हाँ, आपको ये बता गया होगा यस आवर डेटा सेंटर इन मुंबई, यस आवर डेटा सेंटर इन दुबई, सिंगापुर, इटली, राइट? बट दे नेवर टोल्ड यू वेयर इज योर डेटा सेंटर. बट योर CTO and big management folks are aware about it, but engineer doesn't. Why? Because of security issues guys, safety. They cannot disclose the location of data center. देखिए, इंफॉर्मेशन से लेकर वो सिक्योरिटी कंसीडर करते हैं. और इफ यू गेट अ चांस टू एंटर इनटू डेटा सेंटर, दिस इज डेटा सेंटर लुक्स लाइक इनसाइड. ये सब जो स्टैंडिंग
ये दिख रहे हैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये पूरे रैक है, रैक, इसको बोला जाता है सर्वर रैक। ये रैक्स है जो स्टैंडिंग आपको दिख रहे हैं, और इसमें जो ये आपको स्मॉल स्मॉल ये दिख रहे हैं आपको प्लेट्स के जैसा, ये है ब्लेड सर्वर, जो एकदम ऐसे फ्लैट में होते हैं, नॉट लाइक सीपीयू, ओके, टाइप ऑफ सीपीयू बट फ्लैट में ही होते हैं, इसलिए इसको ब्लेड सर्वर बोला जाता है। ब्लेड सर्वर्स आर मोर पावरफुल इन कंप्यूटिंग, एंड दिस सर्वर्स आर बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपका आपकी कंपनी है, पूरे सर्वर आपके कंपनी के, नो नो नो, इट इज जस्ट लाइक मॉल। आप कोई बिग मॉल में जाते हो तो वहां पे एक ही ब्रांड मिलता है क्या, कि सब ब्रांड की चीजें मिलती है? कोई भी बिग ब्रांड मॉल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा कभी होता है क्या एक ही आदिदास का मिलेगा, सब तरफ आदिदास ही रहेगा? नो, नो, राइट। जो ब्रांड चाहिए आपको मिलेगा, सबके अपने अपने स्टोर रहेंगे। सेम हेयर, ये जो रैक होता है, ये हर कंपनी ने रेंट से परचेस किया, रेंट से लिया रहता है, रेंटेड वन होता है, ऑल आर रेंटेड वन। सो आपको कितने चाहिए? एक रैक चाहिए तो इसमें 22 सर्वर्स फिट होते हैं गाइस, 22 सर्वर्स। यानी आपको ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट जो भी केबल्स दिख रही है, दीज आर नेटवर्क केबल्स, जो आपके नेटवर्क और सर्वर को कनेक्ट करते हैं। Once this connection happen, then and then only you are able to access your database server using IP और host name। आप वैसे एक्सेस करते हो ना, कि डायरेक्ट रिमोट लेते हो, तो विद द हेल्प ऑफ आईपी एंड ऑल, राइट। एक तो होस्ट नेम यूज करोगे, नहीं तो आईपी यूज करोगे। So this is data center, okay, and it's secure from all the issues, all disaster. And one more thing is quite cold inside the data center, quite cold, means अगर आपको चांस मिलता है, you cannot survive with your normal clothes, no, it was very cold, because आप सोचो एक नॉर्मल जब ब्लेड सर्वर घर में रन होता है, तो आप उसका हीट देखना कभी, कहाँ पे लोकल में आपकी कंपनी में रन हो रहा है, तो क्वाइट नॉइजी एंड हीट भी बहुत ज्यादा, इसलिए उसको हमेशा आपको कंडीशन, प्रॉपर कंडीशनिंग रूम चाहिए, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग, वो भी चिल्ड वाला, अदरवाइज ब्लेड सर्वर रन नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कंप्यूटिंग पावर मशीन्स, इसलिए उसको डेटा सेंटर में रखा जाता है। क्योंकि डेटा सेंटर मेंटेन करना कंपनी का काम नहीं है, कंपनी जस्ट रेंट से लेगी, जितने दिन रखना है उसके बाद निकाल देगी। दिस इज वन ऑफ द लाइक जस्ट हायरिंग ऑप्शन, rented option, easy, instead of set up whole data center is quite biggest capital issue with your organization. That is the reason organization always rent out the data center, some of the space, not complete data center, according to their needs. You can even buy 2 slots in the single rack as well। यहाँ पे आप दो slots भी ले सकते हो रैक में, एक रैक में, सिंगल रैक में 22 सर्वर्स हम प्लग कर सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि जैसे, और किसी को पता नहीं होता है कि ये रैक किस कंपनी के, नो वन अवेयर, ओनली डेटा सेंटर टीम एंड योर टीम इज अवेयर अबाउट इट, नो वन एल्स। अगर आप भी जाते हो, लेट से कि आपको बोला गया ये आपका डेटा सेंटर, आपके सर्वर से डेटा सेंटर में, यू डोंट नो हु इज नेबर, बिकॉज ऑफ अगेन सिक्योरिटी इशू, नॉइजी नेबर, जो सिक्योरिटी टर्म में यूज किया जाता है, राइट, नॉइजी नेबर मीन्स किसी का तकलीफ किसी को ना होना चाहिए। सो दिस इज ऑल सिक्योरिटी इश्यूज गाइस, दैट्स द रीजन ऑलवेज कंपनी प्रेफर टू स्टोर द डेटा इन data center, and the server always get maintained, not local, Siddesh। why? Due to cost issue, data center maintain भी करना होता है। So once server is there, you need to get access with the help of IP and hostname, then you need to install the operating system, Oracle database, multiple softwares need to install according to your according to your need to set up that hardware. Once hardware is set up, once software is done, then now it is part to push your data, जो multiple sources से आएंगे, right, हमने जो data consider किया है। Once data is there, you need to perform some
process on the data to perform analytics, or let's say you write some PL/SQL code, Python code to analyze the data, right? You can write multiple functions, type procedures to perform some data before sorting, or you want to perform some ETL jobs there. That can be. And once data is there, once procedure is performed, then now it is time to very famous language that is called as SQL. Now SQL comes into the picture to access your data anytime. To want to update, access, perform any DML operation, DDL operation, right? DCL operation, that is possible with the help of SQL. That's the reason this is one of the data access language in the market. अगर data access करना है, the SQL is the only language there that is called as data access language. Okay, this is the just important life cycle, guys. You must aware कि डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर नहीं होगा, उसको डेटाबेस लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर टेक केयर करेंगे. They make sure always hardware should be there, server should be accessible, and they install the Linux. Once they install the Linux, then then and then only they give us to install our Oracle. हमारे पास root का permission नहीं होगा. But if anything required from root side, they will give us sudo or access. Right? Sudo access is just parallel with root. Root का आप ये नहीं कर सकते, role नहीं exchange कर पाओगे. But yes, some commands you can execute with the help of sudo. I'll let you know what is mean by that. Don't worry about it. Those who are not aware. So very important here. What we are going to learn, right? After this all discussion, you must know what we are going to learn. In this, we are majorly focused on Oracle 12C and 19C. That's very important. The next part will be SQL. What kind of SQL we need, what kind of queries we need to interact with Oracle, what kind of data we should get, that is only possible to get with the help of SQL. And then Linux, right? Why Linux? Because your database is going to run on Linux platform, so you must have 20% of Linux knowledge. Okay, at least how Linux works, how to interact. If you log into Linux, how you can access the database, what are the things you need to check, what are the things you to do install to run the Oracle on top of Linux. आपको इतना पता होना चाहिए. Okay, and last but not the least is virtualization. Very small part, I can say only 5%, not more than that. Why 5%? Because we need to set up labs, right? And the labs should be available for you in your laptop 24/7, so that you can independently practice yourself, makes your hands dirty on the Oracle topics, whichever is running. That is our main intention by virtualization. यहाँ पे बहुत expertise नहीं रहेगा, just installation perspective हम knowledge लेंगे, that's it. So major part is Oracle, next one is SQL, third one is Linux. That these all four technologies we are going to touch across all our workshop. So let me explain one more point. Course value addition क्या है? Okay, things are going to learn, that's fine. Now course value addition. What are the things is value added in your working life, as well as you want to upgrade yourself? That's no problem. You'll always show end of this workshop. You will be consider yourself as the experienced Oracle DBA, and you can show your 3 to 4 years of gap रहेगा या current working knowledge रहेगा, working experience रहेगा, you can easily convert as Oracle DBA. That's kind of knowledge you will get. ऐसा नहीं होगा कि आप fresher रहोगे, आपको ये नहीं पता. No, no, no. You end up this workshop will be have the master level of knowledge across all the topics, even from the scratch. Those who don't aware, but what one things you need to be done from your side, you need to spend at least 2 hours every single day. That is the only things need to be performed from your end. तो ही result आएगा, right? Only dreams never give you the result. You must take actions, right? So actions will be on you. Whether your journey is not yet started, whether you already started, doesn't matter, guys.
By end of 2.5 months, you'll be having the immense knowledge on Oracle in every single area. Okay, data guard, patching, upgradation, backup strategies, RMAN, listener, database setup, deployment. If you are going forward looking for any placement assistant from Radical, yes, we have the dedicated team to offer you. They will assist you for job search if you need as a fresher. You already have the experience, no worries, then you can easily get it. So end of this workshop, you also can appear for OCA and OCP exams, that is Oracle certification exam. It is not comes under this workshop, but I'll assist you to prepare for this kind of global certification. It is not part of this workshop and fees and all, but yes, I'll assist you to appear how what things you need to be prepared, आपको क्या prepare करना है, आपको कैसे attend करना है, what are the things is going to ask, I'll help you everything. But you must first conduct OCA, then go for OCP. आप ऑलरेडी ऑल वर्किंग हो, आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, इसका क्लेम आपके कंपनी से कैसे ये करना है, आपके पॉकेट से मनी नहीं स्पेंड करना है वहां. आई लेट यू नो हाउ थिंग्स विल गेट claim from your organization. Okay, the end of this workshop you will get course completion certificate as well. Okay, so that you can show to your management क्या, और going forward आप job searching में होगी, I completed my, see, this is the course, Oracle DBA course from one of the good institute in the market, the authorized institute in the market. आप ये show कर सकते, that is really good for you as well. आपको backdated चाहिए, yes, team will help you to get your certification, course completion certificate end of this workshop. तो आप ये resume में always show कर सकते हो, that makes your value added in the CV. Okay, because Radical is not the startup, right? It is one of the authorized center in the market. So I'm moving to what is Oracle DBA Life. Okay, हमने तो अब समझ लिया सब कुछ. Okay, now it is time to understand what Oracle Database Administrator is going to do. वो पैचिंग करता है, डेटाबेस डिजाइन करता है, डिप्लॉयमेंट करता है. ओके, आरएसी सेटअप करता है. आरएसी मींस रियल एप्लीकेशन क्लस्टर. कंप्लायंस मैनेज करता है, डेटा सिक्योरिटी मैनेज करता है, ऑडिटिंग करता है, यूजर मैनेजमेंट करता है, लॉट मेनी एक्टिविटीज देयर. ओके, तो द पैचिंग इज वन ऑफ द टास्क गाइस. ओके, ओके ओके फाइन फाइन मैन. सो पैचिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटी गाइस. ओके, जहाँ पे आपको डेटाबेस पे पैच लगाने पड़ते हैं. So don't worry about it. I'll give you the background of how the patching works and all. You'll be have the extensive knowledge. Don't worry. Every single topic is considered as a chapter. Every single. Just Mel, please go on mute. Okay, it consider the chapter. जैसे बैकअप बोला, हम 2 दिन नियर अबाउट 8 to 9 आवर्स बैकअप के बारे में डिस्कस करेंगे. पैचिंग मोर देन 4 hours. वाई पैच रिक्वायर्ड, किस टाइप के पैच आते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे एनालाइज करना है, व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी चेक, what should be your plan to apply the patch. I'll give the every single organization standard, not bookish and lab standard. No, लैब स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे आपको, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड मिलेंगे एवरी सिंगल थिंग. क्यों? क्योंकि हमें वहां काम करना है, लैब में नहीं. लैब तो आपके कमांड्स और हैंड्स ऑन होने के लिए, बट नीड टू डिलीवर एज अ ऑर्गेनाइजेशन वर्क. ओके, सी क्या होता है, कंप्लायंस इज ऑलवेज इज अ टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, जिस डोमेन में आप बिलोंग कर रहे हो, लेट्स से अगर आप डेटाबेस हैंडल कर रहे हो बैंकिंग डोमेन की, तो वहां पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस का ऑडिट होता है एवरी 3 months 6 months. Okay, compliance means rules and regulation, how your database should be secured. Simple way. जैसे आपने बहुत बार सुना होगा आईएसओ स्टैंडर्ड, जीडीपीआर, ये वर्ड तो काफी बूम है मार्केट में, राइट? टू हैंडल योर डेटा so that compliance certified organization only get the client, otherwise not possible. आपकी ऑर्गेनाइजेशन पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस होनी चाहिए, तो ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को बैंकिंग डेटाबेस हैंडल करने का अथॉरिटी मिलेगा और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे.
जैसे अगर कोई हेल्थ केयर में बिलोंग करता है उनको हिप्पा कंप्लायंस चाहिए, सॉक्स कंप्लायंस, ओके, ISO standards. There are a lot of compliance in the market, but these are the major ones. Okay, ISO is the basic one, guys, that is mostly work in the manufacturing department. And GDPR nowadays is booming to every single organization. Why? Because of we are dealing with the client data, that is customer data. And as per यूरोपियन यूनियन दे सेड योर डेटा, जैसे हमने बोला कि अपना ट्रांजैक्शन बैंक का डेटा कंपनी यूज कर रहा है टू ग्रो देयर बिजनेस, राइट? द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, हाउ दे ग्रो. सो सेम यहाँ पे भी, बिकॉज ऑफ दैट regulation should be there, and the regulation is nothing but the compliance. Simple. Okay, this is again auditing and encryption. These are all part of our database governance. Governance means take a control of every single thing. जब आप DBA बनते हो, not to perform action, it should be your responsibility to secure the data. Secure the data. Simple. Just like your smartphone, you always protect from your mother, father, girlfriend, boyfriend, right? From every single person. सेम यहाँ पे आपको डेटाबेस को भी उसी वे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. आपकी थॉट प्रोसेस उसी वे से चाहिए जो मैंने आपको स्मार्टफोन के लिए दी है. अगर किसी को एक्सेस देना है तो मैं एक प्राइवेट प्रोफाइल बना के मैं एक सिंपल गूगल का एक्सेस दे सकता हूं मेरे स्मार्टफोन में. शुड आई गिव ऑल द एप्लीकेशन एक्सेस इफ दे वांट टू यूज माय फोन फॉर 10 to 15 minutes? No, right? I should create private profile, give them Google access, that's it. सेम उसी थॉट प्रोसेस से हमें डेटाबेस को टेक केयर करना होता है एंड टू एंड. देन एंड देन ओनली यू विल बी ग्रो एज अ DBA एंड यू विल बी लीडिंग वन ऑफ द टीम वेरी सून. इफ योर थॉट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन. व्हाई? हर क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए व्हाई. आप आपके स्मार्टफोन को अपग्रेड करते हो, व्हाई गाइस? क्यों करते हो? क्योंकि नोटिफिकेशन है इसलिए, या कुछ रीजन होता है? यस गाइस, व्हाई यू अपडेट योर स्मार्टफोन? जस्ट एंड्रॉइड का नोटिफिकेशन है इसलिए? यस, because your Android get upgraded, have the more security, more application, more features. Are you guys agree with me? Are you guys agree with me? Why we are updating the smartphone? All right. Same guys, in the database perspective also we are upgrading database because of this reason. So now, why, if you get a chance to work on 11G, 12C, 12C release 2, 18C, don't worry. 19C पे काम करने के बाद आप किसी भी डेटाबेस लोअर वर्जन पे काम कर सकते हो, किसी भी. एंड व्हाई 19C? बिकॉज 19C having the extended life. What is mean by life? EOL. EOL stand for end of life. हर सॉफ्टवेयर का एक लाइफ होता है, हर वर्जन का एक लाइफ होता है. दैट इज कॉल्ड एज EOL मार्क. तो आप देखो अभी करेंटली ओरेकल इज वर्किंग ऑन 21C रिलीज, बट इनोवेशन चल रहा है, दैट्स नॉट स्टेबल, उसको 3-4 years लगेंगे. बट ओरेकल ने बोला मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट 19C के लिए दे रहा हूं. 12C का सपोर्ट, 18C का सपोर्ट डन. That's the reason people started migrating their database. Support means they are never, if you come across any issue, they will not support you to resolve this issue. You have to sort out yourself if you want to stay on the older version. वो ऐसे नहीं फोर्स करेंगे जाना चाहिए, बट आपको जाना है तो दिस इज द बेनिफिट, नहीं जाना है दिस इज द ड्रॉबैक. That's the reason every single version having the end of life. और Oracle ने बोला है extended period +5 means 2032 तक Oracle 19C मार्केट में रहेगा, with come up with the new versions, new features as well. That's not a problem. But 19C रहेगा, 21C नहीं रहेगा.
Okay, that's the only reason, guys. People are moving. Yes, Neha. Now you can catch it, right? Why you are getting the 19C database? Because Oracle says this is the only stable and having the good features version. Okay. Yes, Sagar. Great. So this is just again flash Oracle का, not मेरा. यहाँ पे ये बताना चाह रहा है Oracle. Oracle is saying कि ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है, कोई डोमेन, कोई वर्टिकल नहीं है जहां Oracle यूज ना होता हो. Whether it is high tech world, whether it is consumer world, whether it is travel industry, telecom industry, banking industry, government, education, every single sector, Oracle is working, guys. Every single sector. So, but to gather this opportunity in the Oracle, what things is needed? The only one thing, the skill which is not compromised. No. You must acquire the skill of next level so that your opportunity door should be open for you. For any organization, what they are looking for, they require the skill. ओके. आप बुक रीड करके ओरेकल का कभी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते until and unless you have the hands on, राइट. ग्रो करना है, इंडस्ट्री में एंटर करना है, बीइंग अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर कंसल्टेंट इन द डेटाबेस, you must have the skill. Eligibility for this workshop, there is no eligibility. If you have the looking for Oracle DBA world, you want to achieve your dream job, this is the right place to join and start your work immediately. Okay. So internship certificate मिलेगा, which is already part of this workshop fees, I think, right? They will means radically not additionally charge for this two certification. If you want to show your 6 months gap, जहाँ पे आपका गैप है, आपको 6 months फुलफिल करना है, आप इंटर्नशिप बता सकते हो. I did internship with Radical for this project. Yes, that is no additional charge. Or also you will get the course completion certificate. Okay. Now this is very important slide for you. Now it's over to you. I know it is quite extended because I given a lot of example, but thank you for your time, guys, and patience as well to listen me. Hope I given your means whatever the time you given. Hope it is valuable for you as well and mine as well. But I given my best to you to clear your doubts and scope of Oracle, what you are going to achieve, right? आप जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स. दैट इज द माय मोटो एंड पर्पस फॉर दिस डेमो. होप आई गिवन एवरीथिंग. If you have any question, feel free to ask. Now this slide for you. Sagar, so my company is providing, like, means they are paying for certifications. Okay. So, are you going to provide dumps? Dumps is not required. I'll help you everything to prepare. डम जस्ट लाइक डेमो डम्स रहेंगे जो आपको हेल्प होंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट आई हेल्प यू हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू क्रैक इट. Okay. या I never recommend dumps because क्या होता है dumps आप रट्टा मार के clear कर लोगे but that will Yeah. not Right. value added in your current life, right? Right. I'll help you end to end. Great. And what things you need to be prepared, where you should be focused, I'll let you know. No worries. Good Okay. question. Yeah. And Thank first you. you should go with the OCA, then target after 2 years of experience, you should target to OCP as well. Okay, but first level is OCA, Oracle Certified Associate, then OCP, Oracle Certified Professional. But it's required the minimum 2 years of real Oracle Database Administrator knowledge. I would recommend, okay? And what about the sessions, recorded sessions? Will we have the access for that? Uh, Recorded session, yes, you will be, see, the session format will be every weekend, Saturday, Sunday, Okay. 2 hours. Okay? Yeah, that's best. Time will be decided. No worries, according to you, according to our all class members.
Okay, and you'll get the recording of every single session so that you can get it downloaded on Yeah, your so we can laptop. prepare also for Yes, that you can particular download day. it because lectures length are 2 hours, and I know it's very hard to remember 2 hour discussion, right? Right, right. So you can revise with the help of recorded session. Yes, Yeah. because going forward we'll have a lot of implementation stuffs. So it's very hard to remember and write. I don't want to keep you busy in that. So recording से आप easily cover कर सकते हो. Here in the live session you need to just focus. That's it. Okay. Yes, perfect. Yes, Neha, yeah, please. So Sagar, what about practice? Means, are you going to provide lab to us, or we need to set up it on our personal lab? Labs are not going to provide, but yes, lab. I will help you to set up lab on your laptop. So I'll Okay. provide all the softwares is needed for that. What are the things it need? I'll assist you to install, guide everything. Okay, we'll have a Yeah, recording session as well for that. You can try from your end. If you come across any issue, I am happy to support you there as well. No yeah, worries. जब तक and अपना लैब सेटअप नहीं होगा हम कोई अदर लेक्चर को टच भी नहीं करेंगे बिकॉज ग्राउंड शुड बी रेडी यू वांट टू बैट राइट yeah. And Sagar, another question is like, we are going to perform all the things on the Linux host, right? राइट So are you going to provide basics of Linux, like basic commands, partition, this? yes 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 I'm going to provide means I can say whatever the dba perspective commands are required Yeah. I'm going to cover that one dba Oh, perspective okay क्योंकि yeah. हमें लिनक्स एडमिन बनना नहीं है राइट Right, हमें right. मेन फोकस है ओरेकल so we'll Yeah, focus on oracle but what are the command needed I'll start from scratch. Linux क्यों है उसके हिस्ट्री से बताऊंगा. Don't worry. yeah. Okay. Yeah, Yeah. All right. Thanks. Thanks, yeah. Sagar. Thank you, Rishikesh. Any question? No, currently I don't have any questions. I mean, all things are clear for me. That's really nice. What about Mehul? I think Mehul आपका voice नहीं आ रहा है. It's quite breaking, not clear to me. Yes, Sanket. No, sir. No, no questions. Okay, don't worry, guys. If you do not have any question right now, no worries about it. You may reach me anytime, but before 10 p.m. Here is my personal number. It's my WhatsApp number as well. Keep a note with you. If you have any technical queries, feel free to reach me. If you have any process oriented question, feel free to reach your coordinator. They will assist you on the admission process, fee structure, how will be installment and all. They will assist you. If you have any question regarding the technical course content, whatever it is, you have any question, feel free to reach me on this number. This is my personal number and WhatsApp number. You may WhatsApp me as well. And thank you all for attending and your all patience. Really appreciate it.